Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today I have selected the word probe for my vocabulary. Firstly, I am going to tell you its grammatical position. The word probe can be used as a verb plus noun. When we say probed, it will become noun. Now I am going to tell you the difference between a regular verb and irregular verb. Regular verb does not have ed at the end. For example, the word burst its first form is burst, second is burst, and third is also burst. And whereas irregular verb have ed at the end. For example, this word is probed. Probed, ed shows that this word is irregular verb. Regular verbs do not have ed at the end, whereas irregular verb, they do have ed at the end. Now I am going to tell you its meaning. Probe give us the meaning of search into, examine, thoroughly, investigate. यानी उर्दू में जब हम किसी चीज़ का गहराई में मुताला करते हैं, तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रोब. और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होते हैं ट्राई टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन दैट पीपल डू नॉट वांट यू टू नो बाय आस्किंग क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, नॉट डायरेक्टली. यानी प्रोब, इन्वेस्टिगेशन या स्टडी, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे जज करते हैं, तो हम बहुत केयरफुली उसको स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. यानी प्रोब जो है वो हमें डीप एग्जामिनेशन या स्टडी या इन्वेस्टिगेशन का सेंस देता है. इट्स फर्स्ट सेंटेंस इज द लायर प्रोब्ड द मैन्स माइंड to see if he was innocent. The word liar, a person who studies or practice the law is known as liar. और उर्दू में से बोलते हैं वकील या बैरिस्टर. Here we are told that liar, they are very knowing, sharp-minded, extraordinary or shrewd person, and this liar was going to study or investigate his client mind, that whether he is telling a lie or whether he is telling the truth. यानी वकील जो है, बैरिस्टर जो है, वो अपने क्लाइंट के माइंड को केयरफुली एग्जामाइन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जज कर रहा है कि देखिए कि ये शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा या he is guilty or innocent. कि जज ये कोशिश कर रहा है कि उसके माइंड को पढ़े और उसके माइंड को अच्छी तरह जज करे कि इसके माइंड में व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. एंड इट्स सेकंड सेंटेंस इज आफ्टर प्रोबिंग द साइंटिस्ट थ्योरी वी प्रूव्ड इट वाज करेक्ट. हियर वी आर टोल्ड दैट साइंटिस्ट गेव अस अ थ्योरी. एज फ्रेंड्स वी रेड दिस वर्ड इन द प्रीवियस वोकैबुलरीज. थ्योरी मीन proposition, supposition or thesis. Here we are told that scientists gave us a theory, a proposition or a thesis, and we are going to investigate his theory, and we are going to study his theory, what he said in his theory, and after deep judgment or investigation we found that his thesis or his theory was correct. It was credible. We can believe in his theory. यानी साइंटिस्ट ने जो हमें एक थ्योरी दी थी, उसे हमने जज किया, हमने उसे प्रूव किया, डीपली हमने उसे इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें पता चला कि his theory, his saying or his investigation is credible or it is right or it is correct. Now we come toward its third and last sentence. King Henry's action were probed carefully by the noblemen. Here we are told that
some people, some noblemen, some gentlemen went for the study or investigation of King Henry's action, and they found that what he said or what he did, it was credible, it was right, because their investigation showed them, or their investigation is satisfied them that the King Henry, what he said or what he did is quite right, is credible. Now we come towards its synonyms: inquiry, study, exploration, judge. All these words are giving us the sense of investigation or judgment or argumentation. यानी इंक्वायरी करना, किसी चीज़ की डेप्थ में जाकर उसे जज करना, स्टडी, एक्सप्लोर करना, इसे भी डिस्कवर या टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन के सेंस में यूज किया जाता है. एंड हिज antonyms are ignore, evade. We read this word in the previous lesson. Evade is giving us the sense of ignore, yeah, judge, you're dodging. Dodge and neglect. I hope, friends, you like my today's vocabulary. If you like my today's vocabulary, please like it, share it, and friends, if you are interested in my previous vocabularies, I am going to give you the link below in the description box. इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी.